शुरू करें। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों इंजीनियर यार। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा करा था कि मैं अपने चैनल पे दो एनपीसीआईएल के ऑफिसर्स को लाऊंगा, तो वो लोग आ चुके हैं। तो आज मेरे साथ सचिन मिश्रा सर एंड उज्जवल सर जुड़े हुए हैं। ये दोनों अभी एनपीसीआईएल में वर्क कर रहे हैं। और मैं, जैसे आप लोगों को पता है, ऑलरेडी एनटीपीसी में हूँ। और ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो देखना चाहते हैं कि एनटीपीसी में क्या होता है, एनपीसीआईएल में क्या होता है। तो ये लोग अपना रोल एक्सप्लेन करेंगे, मैं अपना रोल एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ बच्चों का दोनों जगह सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी गेट 2024 के बेसिस पे एनटीपीसी की फर्स्ट लिस्ट आई है और एनपीसीआईएल की अभी फर्स्ट लिस्ट रिलीज हुई है एंड कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज हुए हैं। तो अगर आपका दोनों जगह सिलेक्शन हो गया तो ये वीडियो आपको आपको मतलब हेल्प कर सकती है डिसाइड करने में कि आपको किस साइड जाना है, क्योंकि हम दोनों अपना अपना रोल एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आपके कॉलेज में कोई जूनियर है या कोई गेट के थ्रू यहाँ पे आना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है, तो उनके साथ आप चैनल का लिंक शेयर करिए। और वीडियो शुरू से करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। सो ओवर टू यू सचिन सर एंड उज्जवल सर, कुछ बताइए अपने बारे में। आपने कैसे तैयारी शुरू करी, कैसे इस लाइन थैंक में यू आए। आदर्श फॉर थैंक यू आदर्श, थैंक यू आदर्श फॉर हैविंग अस। तो आज मतलब सावन का पहला सोमवार है, तो मैं मतलब हर वीडियो में एक श्लोक बोलता हूँ। इस वीडियो में भी शुरुआत में एक श्लोक से ही करते हैं। ये रुद्रा षटकम का है, तुलसीदास जी का उन्होंने लिखा हुआ। नमामि सविशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम गिरिहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। ठीक है, ओम नमः शिवाय के साथ शुरू करते हैं। ओम तो नमः शिवाय। मेरा नाम उज्जवल शर्मा है। आई बिलोंग टू पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। From there, I did my 10th, 12th only in Hindi medium. After that, I did my BTech from mechanical engineering in RTU Kota. After that, I did my MTech in design engineering from NIT Jaipur. After that, I got selected for PhD in IIT Bombay also, and I got a job at that time from college only in Mahindra and Mahindra R&D, Vehicle Dynamics department at Chennai. So during that job, I was also parallelly preparing for GATE. So I got selected for initial interview from the GATE score, and I give interview at the Chennai plant only. NPCIL have a Kalpakam unit at Chennai, so I give my interview there only, and luckily I got selected, and I moved back to Rajasthan only, and I'm currently also like working at Rawalpata site only. So yeah, like it's this journey is very good. I think it's great learning for me. Now Sachin. हाँ तो थैंक यू आलस इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम सचिन मिश्रा है और मैं अमेठी यूपी से हूँ। और मैंने अपना बीटेक लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। और उसके बाद फिर मैंने गेट का तैयारी किया था और यहाँ मैं सिलेक्ट हुआ हूँ। मैंने इसका बीडीएल का भी मैं सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया था क्योंकि मेरा उसी दिन बीआरसी का इंटरव्यू था। तो बीआरसी का भी मैंने इंटरव्यू दिया है और इसमें मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने ये अपना चूज किया। Yes. And Sachin was like first candidate in the waiting list. So like BRC doesn't clear waiting list. So if like the last candidate that was not selected was Sachin in the BRC. But he luckily got selected in MPCL, and I believe that एनपीसीआईएल Department of Atomic Energy, like, to work here is very good. You will be ड्रीम कम surrounded फॉर by very good young mind and old mind also. You will be working with scientists. You will see those things that you have studied in your textbook and other things also, like nuclear reactor, the things that excite young people and young engineers that you will feel here. So I will share that like how I prepare for NPCL interview. So I like we have already shared many interview experience on our YouTube channel also. But for that, for clearing any NPCL interview or any interview, like first you have to prepare some like basic subject. Whenever you go to interview, they will ask like what are your favorite subjects. So you give 4 5 subjects that you prepare for any interview. If you are going for any power plant, then I would suggest that study those subjects or choose those subjects that are related to the power plant. So like if we are from mechanical engineering background, so if somebody asks me like what are your favorite subject and I going for a power plant interview, then I would say basic thermodynamics, strength materials, machine design, uh, these subjects that will be related to power plant, and through that only I believe that it will make a good impact to them also. And what things I would say that if you are going for an interview, then you should be open-minded to them. You should not be like giving false example to them. One example I would say, like during my interview in that NPCL panel, I got fumble at one place.
and I did one mistake. So in that interview, I said, sorry, sir, I didn't know. The chairman, who was a very senior scientist, he said that it is good to accept that you made a mistake. If I would have continued that with that mistake, then that would have made a bad impact on that interview. So yes, like if somebody go with hard work and luck, then the fortune favor the brave, and he will be selected NPCIL or any piece that he wants to. Now, So Sachin, you. Like what was said, I was preparing for BRC interview mainly. So I had watched the videos of sponsor for fluid mechanics and thermodynamics already during the preparation. He's IT professor, right? Yes, yes. And after that, I studied textbook for preparing the BRC interview, like for each subject. And also, I prepared from the notes. So the notes and the textbook, mainly five subjects: heat transfer, thermodynamics, and fluid mechanics. These four subjects I mainly focus for BRC, and also from the notes I studied all the subjects for this NPCIL interview. तो ऐसे था उसके बाद मेरा इंटरव्यू था कायगा में. तो इंटरव्यू ठीक ही चला था, 55 मिनट था लगभग, तो सही था. और मैं बहुत लड़कों को डाउट होता है कि इंटरव्यू हिंदी में देना चाहिए, इंग्लिश में देना चाहिए, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या नहीं होगा. एनपीसीएल में तो पॉलिसी है दैट घर में मातृभाषा, कंपनी में राष्ट्रीय भाषा, दैट इज हिंदी. तो हिंदी में इंटरव्यू देंगे, आपकी बस लाइक यू नीड टू कन्वर्स विद देम दैट व्हाट यू आर थिंकिंग इन टेक्निकल नॉलेज. तो जो वर्ड इंग्लिश के होंगे वो तो वही आएंगे. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गियर तो इसको हिंदी में नहीं बोल सकते. बाकी आप अपनी बातों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, इतना बहुत हिंदी इंग्लिश में लड़के को नहीं करना चाहिए. काफी बच्चे इसमें डर जाते हैं कि हिंदी में दे, इंग्लिश में दे, क्या इफेक्ट होगा, क्या नहीं होगा. तो एनपीसीएल में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश में देना है. इसमें आप हिंदी में अपनी बातों को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं. So, Ujjwal, I just want और to ask you one question. बोलिए. Like you are already working in the one of the prestigious company in private. So, what motivated you to join this government sector? As the Right. salary and everything growth is limited here. So, what motivates you to join NPCIL? With NPCIL, I was also selected for IIM Mumbai, like the native Mumbai that has been converted to IIM Mumbai. I am Mumbai. So, but I reject that IIM Mumbai selection, and yeah, and then I select that NPCIL. That Because I itself believe is a that very big decision. like if you can study for 2 years, and then you will be able to learn. Or by working in a company, you will be at first day you are at the learning point. So और मुझे ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, सो लाइक इसके जो होमी जागी बाबा सर का विजन है, वो मुझे बहुत एक्साइट करता है. लाइक फ्यूचर इज रिन्यूएबल एनर्जी ओनली. We will be run out of coal, we will be run out of fossil fuels very soon, within 50 or 100 years. Then we will have to rely only on renewable energy. और मुझे लगता है कि एनपीसीएल इस चीज में बहुत आगे जा रहा है. We have increases our capacity to like 7,000 megawatt this year, and we will be very soon like releasing 1-2 reactor every year, as our CMD sir has already said of NPCIL. And NPCIL is hugely investing like very huge amount of money into the for making new plants. I give you an example, like the 7-8 unit of Rajasthan, it was costed around 24,000 crore rupees. So like it will produce 1,400 megawatt. Rajasthan, the whole Rajasthan state needed 14,000 megawatt, and the single unit 7-8 produces 1,400 megawatt. So like 10 unit of 7-8, like similar like 7-8, can give power to whole Rajasthan. So like, we are going big, and I believe that future is NPCIL only. That is why when I got the offer, I jumped for it and I joined NPCIL. It sounds like you are giving FOMO to the NTPC. No. I know. If you the NTPC is no doubt NTPC is very big. The NTPC is producing approximately 70-75% 80% of the India. About, yeah, like the NTPC is only producing. NPCIL is very small currently, but technically, if we are speaking like not only the turbine side, but when we go to reactor side, things become more critical, and we need engineers to solve those problems. Like we need to contain the radioactivity that produced. So like NPCIL gives good opportunity who want to continue their career in scientific engineering institute.
That's what I guess. Now, please tell me that what is the selection procedure? Means what is the basic requirement to qualify GATE? मतलब what is the cutoff marks, interview, then final shortlisting? How is So the medical like process? All this thing. yeah, so like every from last 2 3 years, NPCIL is getting like taking vacancy number, huge number like 300, 400, 450. Hmm. So you need a BTech graduation degree. I think the marks for 55% if you are having a BTech, then you will be 55 or 60% mark if you are having a BTech, then you will be eligible for sitting in that interview. So they didn't take any separate exam. NPCL selected candidates based on their GATE score. So suppose vacancy is 150, they will take 1:12 people for the interview. So people like for 1:12, and if vacancy of mechanical is 150, Hmm. so like people from for like GATE All India rank 1400, 150 in a general category, they also get called. And the good thing and the best thing is that you don't get GATE score weightage in that interview. So आपने जैसा सिर्फ इंटरव्यू में परफॉर्म किया उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स पे मिलेंगे. Out of 100 you get 70 marks, 75 marks. Then that will like this year interview cut off score was like 75. Last it was 76. So if you get out of 100, if you get 75, above 75 marks in general candidate interview, then you will be selected. So This and is after getting selected in NPCL, like my result come on, the process is very quick. मार्च में आपका रिक्रूटमेंट का नोटिस आ जाता है, अप्रैल में फॉर्म भरे जाते हैं, मई में उसका आ जाता है कि कब कब इंटरव्यू है, जून में इंटरव्यू चलते हैं, जुलाई में रिजल्ट आ जाता है, और 20-22 जुलाई के आसपास आपको रिपोर्ट करना है मेडिकल के लिए. एंड फ्रॉम 1 अगस्त यू विल बी एट एनपीसीएल ट्रेनिंग सेंटर. So after joining NPCIL, you will go to a 1 year rigorous training program. In this training program, you will be studying about nuclear science, nuclear physics, reactor, moderator, PhD. That are the components that make a reactor. How to produce power, how to convert that nuclear energy into convert into at last the last product of our, that is electrical energy. So ये सब चीजें हमें पढ़ाई जाती है और उन्हीं के बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं, इंटरव्यू होते हैं. सो if you say that there will be around 70 to 80 पेपर in single year, और फिर उस मार्क्स के हिसाब से आपको मार्क्स और इंटरव्यू के हिसाब से आपको चीजें मतलब आपकी एक कट ऑफ बनती है, उसमें एक वेटिंग लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से आप साइट चूज कर सकते हैं कि आप राजस्थान में जितनी वैकेंसी है तो उसके हिसाब से दे सकते ओके. तो अगर आपने इंटरव्यू में अच्छा करा है हैं. तो ऐसे यू विल रहता है, गेट अ. मतलब आप हाँ, तो मतलब अगर आपने इंटरव्यू यहाँ पूरे हाँ ट्रेनिंग में अगर अच्छा आप करा है तो लाइक पोस्टिंग आप डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, चॉइस दे सकते हो मतलब. हाँ पोस्टिंग आप जिसके अच्छे नंबर आते हैं वो हेडक्वार्टर जाता है हम्म. मुंबई में, जिसका एमपीसीएल का हेडक्वार्टर मुंबई में, तो वहाँ पे इस साल तो आर&डी की वैकेंसी भी आई है, रिक्वायरमेंट की आती है, सिविल की आती है, जहाँ पावर प्लांट मतलब प्रोड्यूक्शन की आती है, प्रोजेक्ट की आती है, और रनिंग पावर प्लांट में जो जो सेक्शन होते हैं, ऑपरेशन होता है, मेंटेनेंस होता है, उनकी वैकेंसी आती है. तो आप बेस्ड ऑन रैंक एंड बेस्ड ऑन वंस इंटरेस्ट यू कैन जॉइन व्हाट इज ओके. योर. और सचिन आप थोड़ा सा बताइए कि मैंने ऐड ही कर दिया था जितना था शुरू से अंत तक. ऐसा तो तो कुछ आप ऐड करने लोग, का है नहीं एक्स्ट्रा तो. तो आपने बोला कि 70 से 80 या 17 से 18? 70 से 80, आउट ऑफ 100 यूनिट अबाउ 75, 75 मार्क्स नंबर जाना चाहिए. 70 मार्क्स से ऊपर कट ऑफ होती है, बट हाँ. द फर्स्ट कट ऑफ वाज 75 दिस ईयर. 75, that's what I said. ओके. तो अभी आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है? हाँ, we have like in this August we will be completing 2 years in our NPCL. एक साल की ट्रेनिंग हो गई और एक साल हमने प्लांट ज्वाइन कर लिया वहाँ पे, जब वहाँ पे हम अभी शूट करेंगे. उज्जवल, मेरा आपसे एक सवाल है कि यूजुअली क्या यस मैं होता तो है, यही कहूँगा. जैसे कि ऑलरेडी लोग जैसे बोलिए. प्राइवेट में वर्क करते हैं तो उनको सबसे बड़ा इशू रहता है टाइम कंस्ट्रेंट का. ऑफिस आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, फिर पैसे आते हैं तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, थोड़ा ये भी कंसर्न होता है. तो वो सब आपने कैसे मैनेज करा कि अपने खुद में जील होनी चाहिए, घर से दूर हो और नई शहर है उसमें आप पढ़ रहे हो, तो गेट की तैयारी अपने में एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो कैसे स्टार्ट करा? एक्चुअली वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. जहाँ चाह है वहाँ राह है. रहा है. तो एक बंदे को अपने कमरे में बैठना ही पड़ेगा, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी. अगर कोर्स नहीं कर रहा था तो कोर्स करना ही पड़ेगा. हम्म. तो वो वही बात है. लाइक आई वाज नॉट सेटिस्फाइड इन दैट, लाइक आई गॉट डिसेंट पैकेज इन देयर ओनली. लाइक पैकेज वाज गुड,
but I was not satisfied. I'm not serving my country at that time. तो मेरी तो यही चाह थी कि मतलब कि मैं मतलब अपने देश के लिए कुछ करूं, और मुझे एनपीसीआई एक सही जगह मिली वो चूज ट्रू करने के ट्रू। लिए। तो अब अगर मतलब जिसने को कॉलेज के साथ गेट का कोर्स कर रखा होगा ना, उसको 2-3 घंटे के अगर वो रेगुलर दे पाए एक साथ, so that will be sufficient, I say, because in that 2-3 hours he will be solving question, giving paper, and that will make him revise. If you have completed a gate syllabus, then it will be easy. But if you are completing your gate syllabus, that will be taking around like 1,000 hours. 1,000 घंटे का कोर्स होता है अगर आप किसी कोचिंग का ले, खुद करे बैठ के। इतना टाइम देने में शुरू में दिक्कत होती है, बट अगर आपने वो कर रखा है तो चीजें आसान होती है। वन सेकेंड। और आप बताइए, आपको एनटीपीसी कैसा लगा? एक्चुअली एनटीपीसी आपको पता ही है थर्मल में अभी सबसे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी ब्रांचेस ऑलमोस्ट हर जगह ही हैं। पहले तो इसमें मतलब सिलेक्शन लेने के लिए आपको अंडर 500 रैंक लानी चाहिए थी गेट में, बट अभी पिछले 2-3 साल से ट्रेंड ये चला आ रहा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में 1500 के नीचे हो तो ऑलमोस्ट आप एनटीपीसी में आ सकते हो। और अभी मैं एनटीपीसी मेजा में जैसे पोस्टेड हूँ, और मेरी ट्रेनिंग एनटीपीसी रामाकुंडम में हुई थी, और एनटीपीसी अभी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन फेज में है। आपको पता ही है पावर की डिमांड कितनी बढ़ रही है, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि था आपके एनपीसीएल भी अपने एक्सपेंशन के फेज में राजस्थान में, वैसे एनटीपीसी अपनी 800 मेगावाट की यूनिट ऑलमोस्ट हर जगह ही ला रहा है। मेजा में भी 3 यूनिट आने वाली है, रामाकुंडम और तेलंगाना एडजेसेंट है। रामाकुंडम भी मतलब 800 मेगावाट की शायद वहाँ भी 2 या 3 यूनिट आने वाली है। तो एनटीपीसी का भी शायद 132 गीगावाट का प्लान है 2032 तक। सो इटसेल्फ इट इज अ वेरी बिग नंबर। एंड बस यही, बाकी गेट के थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो। पहले इंटरव्यू होता था, अब सिर्फ शॉर्ट टेस्टिंग के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। और बाकी मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन करा है, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट कंपनी है, मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। प्रॉपर आपको टाउनशिप मिलती है, आपके आने से पहले आपका रूम वगैरह सब रहता है। बट एक थोड़ा शिफ्ट ड्यूटी का इशू है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी सेलेक्ट होते हैं दे नीड टू डू वर्क इन अ शिफ्ट, एंड द शिफ्ट टाइमिंग इन माई साइट इज लाइक मॉर्निंग 7 to 2 यू हैव टू डू द वर्क, देन 2 to 10, एंड देन नाइट शिफ्ट इज ऑफ 9 hours, 10 to 7 in the morning. So if you don't have any issue with the night shift, then you come and enjoy the, what I say, cake of piece of NTPC. This is Okay. How my is the first. colony and surrounding environment? I believe NTPC could provide good housing facility, right? Housing Uh, facility and hospital facility also. and the good thing about NTPC is like the medical facility is unlimited, even for you and even for your family. And the hospital that is impaled here are the top hospital, like the Max Fortis. So you don't have to be take care कि medical पे खर्चा होगा. Every NTPC I think will take only 1% जो भी expenditure होता है. That is the best thing why people join here. And the second thing is about the township. Township in I think among the all PSU, NTPC township is very best because वही जान ही अपने टाउनशिप के लिए जाती है। In the township facility, you will get the free gym, swimming pool, sports activity, basketball, volleyball. Even in my video, the viewers which are watching, वो देख सकते हैं मैंने एनटीपीसी सोलापुर एंड एनटीपीसी मेजा की वीडियो बना रखी है। तो उसमें यू आर गेटिंग एवरीथिंग, एंड इट मीन्स इन अ वेरी बेसिक नीड जो ह्यूमन की होती है वो सब आपको एनटीपीसी प्रोवाइड करता है। एंड ओनली इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट यू हैव टू वर्क फॉर द 8 hours, एंड रेस्ट ऑफ द डे इज योर। अब जो करना है वो करो, नो वन इज गोइंग टू आस्क कि क्या करना है कैसे करना है। दैट इज द गुड थिंग, मतलब आई थिंक दैट व्हाट आई फील अबाउट एनटीपीसी। Like the same facility we are also having at NPC. मेडिकल वहाँ फैसिलिटीज पे भी ऑल्सो है ना, सेम, like दैट इज medical अनलिमिटेड। facilities also, like we have that CHSS card, we have that हम्म। internal hospital, and all the dependent get covered. And we also get the same thing, because like they also given by the government of India only, right? Always government of India only. So like I believe all the PSU give same type of facility. So if सो somebody want to go for a scientific temperament or career, then he can join NPCL. Or if somebody wants to go like more into management things, no one wants to grow like project things, then I believe then you should go एनटीपीसी, for NTPC. ट्रू ट्रू। NTPCL also you can go for like projects, right? So, like in NTPC, designing work is little bit less. Like you have to work in the operation or the generation. So already boiler, turbine, all the things are designed. So you no need to work on that sector ना. Just every मतलब ये सारी चीजें aligned है. You have मतलब आपको आना है, उसको maintain करना है, operation में continue run में रखना है operation. So in your case, I just want to know like you are working in the design sector, designing of the nuclear reactor, or you are also just working in the operation department.
Currently, we are in operation department, but NPCIL do all the things. NPCIL Okay. procure the land, design the nuclear power plant, and build the nuclear power plant, and run also the operation and maintenance also comes. And also at the end, it also like take care of the plant that has been goes above the age. Like, if a nuclear power plant, if you say like it's have age of around 40 to 45 years, a nuclear power plant having the age. Mm-hmm. So if you compare like economic wise, if a nuclear power plant required 5,000 megawatt of investment, similar thermal power plant will require 500 megawatt of investment only. It will Mm-hmm. be 10 times costly. But running cost of nuclear power plant is very less. You need uranium fuel only. You don't need like two three trains of coal. Like I Mm. know like you need very huge amount of coal, Huge like, and don't want coal to talk and about it, water but also. the thing is better. Yeah, the coal is the main thing that is why government is want to invest in NPCIL or any renewable energy source. NTPC is also like shifting its move up. NTPC is also like collaborating with NPCIL and made also one more PSU, right? Mm-hmm. JV, that's what we call joint We venture. need to, yeah, yes, they are creating a joint venture so that India For can the get more nuclear power plant. for the new renewable energy or renewable side, NTPC is also doing many things like wind energy, solar energy. Even the Wind, solar, yeah, Uh, Asia's largest solar power plant is developed by NTPC in Ramagundam itself, floating solar. And even okay. for the what I say smoke that left after burning of the coal and NTPC is doing installing the FGD fuel desulfurization and NOx SOx to remove it, all this thing. So NTPC भी काफी try कर रहा है because at the end we all know future is renewable only. Like हम coal को Yeah. कितना कितना यूज कर सकते हैं, at the end it is limited now. NPCIL is also we have many types of nuclear reactor. Like currently we are working on three nuclear reactor in India. NPCIL is also exploring more options, more advanced nuclear reactor. Hmm. The Homi Baba said that one fuel can be used for 5,000 years. True. He gave the three-step plan for NPCIL. That also NPCIL is working on. So that I believe future is very bright for NPCIL and Hmm. NTPC both. So, Joel, So let's if talk about the most yeah, spicy thing, your salary structure. I think most of the students are waiting for this part only. So, what is? You can get that thing. The NPCIL advertisement itself says that Hmm, your basic pay will be 56,100 rupees, hmm, and at that after completion of your training, you will be getting 9% increment. hmm, So one person can get that 61,300 will be his basic pay, hmm, and above that, like current DA rates are like whatever they are, you hmm, can get that salary amount. hmm, So it's a good amount. It's a good amount for a new joining. And also, other than that, NPCL also provide housing facility, hospital facility, education school facility like atomic school are there in the NPCL colony. hmm. Family life is also very good in NPCL. So, HRE you are not getting. HRA currently we are living in a NPCL colony only, no? That is why we are Oh, not getting HRA. But if you are not living with in the NPCL colony, then you will get HRA. HRA transport allowance you will also get if you are not getting if you are not taking company's vehicle for drop and pick up point at colony hmm. to plant, you will also get transport allowance also. These That things is. anybody can find in the official advertisement. They have already said this. So now let I tell you about what NTPC is giving us. Basically, in the training you are getting the 40,000 rupees, and just after the training, and in the next promotion list, your basic will be increased to 50,000. So in 50,000, you are getting the DA as per the PSU. Like in your case, DA is around 50 plus, but in our case, current rate is 49%. It is little bit low as compared to the central government. And then HRA same, we are also getting the housing facility, so we are not getting that. And in transport allowance that we are getting, petrol allowance we are getting, and at cafeteria allowance, that is means as compared with the central government job, you are getting this more in PSU. That is 35% of your basic pay. So overall, your We growth also set. get like cafeteria allowance, but that cafeteria Hmm. the canteen allowance that we got that is less, but we also get the canteen that also covered in our city. The canteen allowance.
We have So got that the same thing. 35% Not I think 35% it is less. Hmm. Not 35% it is less, but we also get like that canteen allowance fee is also added to the NPCIL. Mhm. So guys, And also one thing, during training you said that the amount is 40,000. NPCIL has increased its amount, like last year it was 55,000. From this year they have increased its amount to 74,000 per month during training only. From the first month you will get 74,000 per month. That you can also see in the advertisement. Like they have increased the stipend. So actually the one person who getting NPCIL, 40,000 yeah, is our 40,000 that you said that basic pay during the training time. basic pay. Apart from the 40,000, Okay. you are getting the DA cafeteria allowance during the training type is half of 35%. That is 17.5%. So that in NPCIL hand is you similar are. to like Bharat. Hmm. And NPCIL is similar to like Bharat Institute. We have a training institute. A person will be studying there for 1 year. So Hmm. for during studying, he gets 74,000. That is more And than after enough. joining, you will be like delayed. Yeah. After Like, we getting that, you will get the group A level salary post. It it is follows like. the Department of Atomic Energy for the same from central government, so and it is governed by like Prime Minister of India office. Mhm. So it follow the same central government rules. सो उज्जवल एंड सचिन, सो इस इंटरव्यू को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों से बात करके काफी मजा आया। आई थिंक दोज हु आर प्रिपेयरिंग दे इजीली गेट कि एनटीपीसी में क्या वर्क होता है, एनपीसीआईएल में क्या वर्क होता है, एंड यू कैन इजीली डिसाइड दैट इफ यू आर सिलेक्टेड इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, सो इन विच डायरेक्शन यू हैव टू गो। सो थैंक यू Thank you, सचिन Anas. and Ujjwal for connecting with me and connecting with my channel Thank, Engineer Yaar. thank you, Anas, for having us. I also just want to know Thank your channel name, so those who are watching can also go to your channel and increase the subscriber count in both of the channel. Our, if somebody is preparing for NPCIL interview now, he will already know that we are very known people for NPCIL interview guidance. Yeah, I'm joking only. His channel name is Mechanite. You can search with Sachin channel. The channel name is MECHANITE. You can search Mechanite NPCIL interview experience. And also we have a website mechanites.com. And if anyone has suggestion what kind of content we should put on the website, then they can contact us and tell us about that. Yeah, Sachin has opened mechanite.co.in. Mechanites.com. Mechanites.com. From there, we will be sharing interview questions of different PSU or different interview, and like one can also share his own interview experience also, so that a person like it will be having a cumulative interview experience at one site only. We don't need to go to Quora and other site to find those things. So like this is to help other students who are like who don't have any idea, who are sitting at a remote place, who don't have any elder brother to guide. So like that's why Sachin has opened his website and doing those things. And I believe like, it's a good thing for future generation to prepare if they are preparing for any interview. Within mechanical domain we have started this, but with other domains we will also expand those things. So guys, if you want to prepare for and if you want to know anything about NPCIL, just go search Mechanite. You will get a lot of interview and बस follow करो, like करो, subscribe करो दोनों channel को, Engineer Yaar and Mechanite. Thank you, Ujjwal and Sachin. Thank you, Anas. Thank you, Anas.